Welcome back to once again to our new slides for the power sharing part 2. Students, in the previous slides we have seen that what is the need of the power sharing and why to study power sharing. Okay, and even we have also seen the two case study of the different two countries, that were Belgium and Sri Lanka. Okay, now today's class we will see just back to the next slide, that is meaning of majoritarianism. What is the meaning of the majoritarianism? इसका मतलब क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है. It is a belief that majority community should rule a country whichever way they want, disregarding the needs. Please underline, disregarding the needs and aspirations of the minority communities. Majoritarianism का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी कंट्री में कोई भी एक कम्युनिटी के लोग जो कि नंबर्स में ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकते हैं या फिर वो अपने अकॉर्डिंग उसको रूल कर सकते हैं और उनके नीड्स, उनके एस्पिरेशंस को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं. जैसा कि श्रीलंका के केस में आपने देखा दैट सिन्हाला स्पीकिंग पीपल दे वर नॉट एग्री टू लिसन द डिमांड्स ऑफ द तमिल स्पीकर्स. अभी आपको इसका मतलब समझ में आ गया? ओके, फॉर एग्जाम्पल द मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी इम्पोज देयर रूल ऑन माइनॉरिटी तमिल्स इन श्रीलंका. और वो इम्पोज तो कर ही रहे थे श्रीलंकन तमिल्स, सिन्हाला स्पीकर्स, और वो तमिल स्पीकर्स की बात भी नहीं सुन रहे थे. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट. मेजॉरिटेरियन पॉलिसी ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट. अच्छा, मेजॉरिटेरियनिज्म तो हमको समझ में आ गया क्या है. नाउ मेजॉरिटेरियन पॉलिसी ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट. In 1956, an act was passed that recognized Sinhala as the official language. Means एक act 1956 में पास किया गया और जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया. अब यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि मीन्स जितने भी गवर्नमेंट जितने भी उनके वर्क हैं वो सब मतलब सिन्हाला लैंग्वेज में होने कंपलसरी थे और ओवरऑल सिन्हाला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया. जैसे कि इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया की? कैन यू आंसर मी? थिंक अबाउट दैट. इट इज़ हिंदी. रिमेंबर दैट देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ओके, सेकेंड, गवर्नमेंट फॉलो अ प्रेफरेंशियल पॉलिसी टू फेवर सिन्हालाज इन यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. मीन्स अब किसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और फेवर्स मिल रहे थे श्रीलंका में? सिन्हालाज कम्युनिटी को, सिन्हालाज स्पीकर को. नेक्स्ट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स बुद्धिज़्म एज स्टेट रिलीजन. अब मीन्स जैसे कि इंडिया में हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. ओके, बट in Sri Lanka, Buddhism has recognized as the state religion. Okay, go for the next. अब इसका consequences on Tamils means इसके क्या effects पड़े, इसके क्या प्रभाव पड़े तमिल्स पर, आप ये देख सकते हैं. उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा जो मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी जो फॉलो की गई श्रीलंका में. ओके, फर्स्ट, फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज्ड अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. जो तमिल स्पीकर्स थे वो अपने आप को अलग महसूस करने लगे क्योंकि सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो उनको उनके अधिकार नहीं दे रहे थे, उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, उनके यहाँ तक कि उनके लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना गया. Second, they feel Sinhala leaders not sensitive towards their language and culture. Even जो सिन्हाला लीडर्स थे वो उनकी कल्चर लैंग्वेज को भी मानने के लिए कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था. किसको? सिन्हालाज लीडर्स को. किसका नहीं मानना चाह रहे थे? तमिल स्पीकर्स का. कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम. कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट श्रीलंका का सब कुछ जो है तमिल स्पीकर्स को देने से मना कर रहे थे. इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना चाहते थे उनको.
Even they are discriminated. Who are discriminated? तमिल स्पीकर्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. किसके द्वारा डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे थे? सिन्हलाज स्पीकर्स के द्वारा. सो अब उन तमिल स्पीकर्स और सिन्हलाज स्पीकर्स जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज थी श्रीलंका में, उनके मन में उनके रिलेशंस को लेकर विवाद और स्ट्रेन्ड हो रहा था. स्ट्रेन्ड मीन्स उनके बीच में उनका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा नहीं था, बेकार था, क्योंकि वो अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे. कौन अलग महसूस कर रहा था? तमिल स्पीकर्स. गो फॉर द नेक्स्ट. वाई डिड श्रीलंकन तमिल्स डू, सॉरी व्हाट डिड श्रीलंकन तमिल्स डू? तो श्रीलंकन तमिल्स ने फिर क्या किया जब उनके साथ मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी फॉलो की जा रही थी? तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया? दे ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज. उन्होंने अपनी पार्टी बनाई. किस लिए? फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. क्योंकि तमिल स्पीकर्स भी ये चाहते थे कि उनके तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए. सेकेंड, दे वर आस्किंग फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी. रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि रीजनल मीन्स रीजन, ऑटोनॉमी मीन्स वो हर तरफ से अपने आप को स्वतंत्र चाहते थे. टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स. उस प्रोविंस उस स्टेट में उन जगहों पर, उन एरियाज़ में जहाँ की तमिल्स रहते थे. नेक्स्ट उन्होंने क्या डिमांड किया? कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स. आपने देखा कि जब मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी फॉलो हुई श्रीलंका में तो सिन्हलाज स्पीकर्स जो थे उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी. तो इसलिए अब जितने भी तमिल स्पीकर्स थे वो क्या चाहते थे कि उनको भी इक्वालिटी मिले जॉब्स में, एजुकेशन में, सिन्हलाज की तरीके. नेक्स्ट, बाय 1980s दे स्टार्टेड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम. इलम इज़ द तमिल वर्ड जिसका मतलब होता है स्टेट. और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में उन लोग सब क्या डिमांड करने लगे तमिल स्पीकर्स? कि उनको एक अलग से स्टेट बना के दे दिया जाए. अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लिट्टे? आप इसको फाइंड आउट करिए और ज़रा इसकी हिस्ट्री भी पढ़िए कि लिट्टे क्या है, क्यों बनाया गया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए. ठीक है. नेक्स्ट, सिविल वॉर. सिविल वॉर का मतलब आप समझते हैं? व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल मीन्स रिलेटेड टू द सेम कंट्री. ठीक है. अब सपोज आपके घर में देर इज़ अ टू ओपिनियन हैविंग पर्सन्स आर देयर एंड दे आर नॉट एग्री विथ ईच वन ओपिनियंस, देन व्हाट विल हैपन? आपके घर में कुछ सदस्य हैं जो कि एक दूसरों की बातों से एग्री नहीं है, तो फिर उन लोग क्या करेंगे? आपस में विवाद हो जाएगा. आपकी लड़ाई आपके नेबरिंग से नहीं हो रही, नेबर से नहीं हो रही, आपकी लड़ाई कहाँ हो रही? आपके घर के अंदर. So what is the civil war? Civil war is such a kind of situation where inside the country different communities or different peoples are not satisfied with each one's or others opinions. Okay. अब what led to the Sri Lanka to the civil war? अब क्योंकि तमिल स्पीकर्स जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे सिन्हलाज स्पीकर के डिसीजन से, इसलिए ये कारण बना श्रीलंका को सिविल वॉर में ले जाने का. और उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? द इंक्रीजिंग डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज लेड इनटू अ सिविल वॉर. अब सिन्हलाज और तमिल स्पीकर्स में सिविल वॉर होने जा रहा था, हो रहा था. उसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे लोग मारे गए. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड. मैनी तमिल्स वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री. क्यों तमिल्स को अपना घर छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में ऐसे रिफ्यूजी जाना पड़ा? क्योंकि तमिल जो थे वो माइनॉरिटीज़ में थे श्रीलंका में. आपने देखा सिर्फ वो 18% ही थे. उसमें भी कुछ श्रीलंकन तमिल्स थे और कुछ इंडियन तमिल्स थे जो कि बुद्धिज़्म भी कुछ फॉलो करते थे, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं. ठीक है. अब सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री वॉज टेरेबली डिस्टर्ब. अब सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ मीन्स
अब सोशियो मीन्स कम्युनिटी, एक दूसरे को उन लोग आपस में मानने को तैयार नहीं थे, इकोनॉमिक लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो रही थी, दोनों एक दूसरे के कल्चर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नेक्स्ट, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अभी तो हमने ये देखा कि किस तरीके से श्रीलंका में क्या क्या उसके कॉज थे सिविल वॉर होने के, लेकिन बेल्जियम जो और एक केस स्टडी हम कर रहे हैं दूसरे कंट्री का, बेल्जियम, वहाँ पर क्या उन्होंने मेजर्स लिए, क्या एकोमोडेशन किया उन्होंने, डिफरेंट स्पीकिंग कम्युनिटीज़ पर्सन्स थे, क्या किया उन्होंने, सबसे पहले देखिए। Situations and arrangement made in Belgium are different from that of Sri Lanka. Belgian leaders recognize the differences and diversities in the countries. अब जस्ट इसके ऑपोजिट श्रीलंका के जस्ट ऑपोजिट बेल्जियम में क्या हुआ, जो डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल के लोग थे उनको भी डाइवर्सिटी में रिकग्नाइज किया गया, और 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times। अमेंडेड मीन्स उसमें चेंजेस करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए ताकि सभी को बराबर अधिकार दिए जा सके। For what purpose the Constitution of the Belgium has been amended 4 times between the 1970s and 1993s? The answer is to accommodate everyone to live together while having the different and while having the diversities. Okay, go for the next. What were the constitutional changes? Constitutional means the changes which has been guaranteed by the constitution. In the case of Belgium, we will see what were the changes. First, number of Dutch and French speaking ministers in the central government will be equal. अब ये कहा गया बेल्जियम में कि ठीक है, there are the 2 different communities speaking persons are living in the Belgium, ठीक है, अब दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स उनके रहेंगे। नेक्स्ट, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ बोथ कम्युनिटीज़। अब कुछ स्पेशल लॉज भी रिक्वायर थे, उनकी भी ज़रूरत थी, क्यों, ताकि फ्रेंच बोथ कम्युनिटीज़, कौन थे वो बोथ कम्युनिटीज़, डच और फ्रेंच कम्युनिटीज़ को, नो डिसीजन कैन बी टेकन बाय एनी कम्युनिटी यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मीन्स अकेले ना तो डच कोई डिसीजन ले सकते थे कंट्री के लिए और ना तो फ्रेंच, और मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, और बहुत सारे जो पावर्स थे वो सब किसको दे दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट को। तो मीन्स दीज वर द चेंजेस विच हैज़ बीन अकर during the 1970 and 1993 in the country of Belgium. Okay, go for the next. Now, state governments not subordinate to the central government. Listen to me very carefully and underline the term or the word not subordinate. इसका क्या मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को मानने के लिए मजबूर नहीं थी। ओके, because the power has been taken from the central government and it has been equally given to the state government. Okay. Brussels as a separate government, and what was the Brussels? It was the capital city of the Belgium with equal representation from both communities. Okay, I will ask you that what was the special case of the Belgium that in the capital city of the Brussels the French were in the majority and the Dutch were in minority. Meanwhile, in the rest part of the country of the Belgium, the Dutch were in the majority and the French were in minority. It was the special problem of the Belgium. You have to be very carefully. Okay, one question I want to ask you by your own. You have to find it. Can anybody tell why the French accept equal representation in Brussels even though majority in Brussels? This is my question. Okay, I hope you will get my term. Okay, next slide. Sorry. Okay, why power sharing is desirable? Student, do you think that power sharing is desirable? I hope so. If
there is no power sharing will be done in your class, and if the same monitor will be there for the same complete whole session, how you will feel it? You have seen that it may be or not, but it is there that in each and every month the monitor is going to be changed. It means in your class there is the sharing of the power. Power is not lies in the same and single hand. It is going to be distributed equally to the other. Okay. Okay, what are the two reasons especially for the sharing of the power? First, it reduces the possibility of conflicts. अगर पूरे साल क्लास में एक ही बच्चे को मॉनिटर बना दिया गया तो हो सकता है कि वो जो भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो भी सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनकी बात सुनी जाए, दूसरों की बात नहीं. जैसे कि फॉर अ बिग डेमोक्रेटिक कंट्री पावर शेयरिंग इज़ द ट्रू स्पिरिट एंड पावर शेयरिंग इज़ मस्ट. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो लोगों में क्या होगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी. इंस्टेबिलिटी मीन्स बार बार हो सकता है कि सरकार गिर जाए. एंड डिसयूनिटी ऑफ द कंट्री, लोग अपने आप को जो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं वो अलग समझ सकते हैं. So it is the prudential reason, underline, it is very important. It may become in the board exam also, that what is the prudential reason of the power sharing. Did you get? Okay, next, somebody, because it is the very spirit of the democracy. very spirit का मतलब क्या है यहाँ पर कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती है, फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी. जैसा कि आपने स्टैंडर्ड 9th में नाजिज्म चैप्टर में देखा था, हिटलर पावर शेयरिंग नहीं करता था. ओके, इफ देर इज नॉट पावर शेयरिंग तो फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं है. ओके, सो व्हाट इज द सेकेंड reason that in democracy power can vest in one hand, it is exercised by people. And a legitimate government means वैसा गवर्नमेंट जो पूरी तरीके से सभी को इक्वल राइट्स देता है, is one which consult people in the decision making. People participate and have a stake in the government. This is called the moral reason. These are the very important points, my dear students. It may become in the board exam that give one prudential reason or give one moral reason of the power sharing. Okay, I hope that you got it. Next, forms of power sharing. Okay, what are the different forms of power sharing? First is horizontal power sharing. Horizontal power sharing means when the power has been divided among the different organs of the government, that is executive, legislature and judiciary. It is also called the separation of power, which results in balance of power, so that no single organ can enjoy unlimited powers. Here executive exercise powers which remain responsible to legislatures. Judges are also appointed by executives, and judges also can check the laws passed by the legislature. Means each and every item is independently and they do not depend on each other for making their decisions correct. Next, vertical power sharing. Vertical means the vertical line means when the power has been divided among the different levels of the government, it is called vertical power sharing. You have to remember that what is the difference between horizontal and vertical sharing of the power, that in the vertical division of the power sharing, that the power has been divided at the same level, and in the vertical it has been divided into different levels. Okay, first is central government, state government and the local government. It is also maybe called local government as local self government. Again it will be divided local self government in urban and rural. In urban area you can find municipal corporation, and in rural you can find gram panchayat, these all. Okay, this is the division of power. This kind of arrangement are found in a federal state. Okay, what do you think, which type of a federal which type of a country India is? Federal? Okay. Next, power sharing among different social groups. Different social groups means you have seen in the case of the Belgium that there was the different social communities were living over there.
such as, which were they? Yes, remind you. Those were Dutch and French. Yes, such as the linguistic. Who is the linguistic? What is the meaning of the linguistic? The person who speak more than two languages or two languages. Okay, means the person who are living for the different community and the different religious groups. For example, the community government in Belgium also has been formed. Such as arrangement also been done in India through reserve constituencies for different social groups. Now you have to very carefully get to know that what are the reserve constituencies. Reserve constituencies are those areas or those places from where only the reserve, such as scheduled caste, scheduled tribes, the weaker sections of the society such as poor, women, all these. Okay, they also have the right to get the power in the power sharing. Next, power sharing among political parties, pressure groups and movements. In political parties and pressure groups means the parties or the traders, the group of the traders, businessmen, employees, etc. Okay. In democracy, various political parties contest elections and some have stakes in government as a ruling party or parties. In case of a coalition government, what is the meaning of the coalition government? Suppose in your class 4 monitors are there and amongst them no one is getting the full majority of the class, then what will happen? Amongst them and all 4 of them, they will decide that they will form a coalition type of monitorship and they will decide who will be the one leader of their class. Similarly, in the coalition government, if any party is not getting, in the case of the Maharashtra, was conducted last 4 months its election, you have seen that none of the political parties was getting the majority. Then what they have done? They have formed a alliance. Remember that there is the difference between coalition government and alliance. Alliance is such a type of agreement where they are ready to go to unite with each one. एंड फर्स्ट वो क्या करते हैं, अगर उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, 2-3 पार्टी 4 पार्टियां मिलके एक अलायंस, एक समझौता, एक वो बनाते हैं और उसके बाद जो उन लोग गवर्नमेंट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट. ओके, my homework is for you that please find out the full form of the UPA and NDA. It is not the National Defense Academy. Please do not give this answer. You find out. Ask your parents also. Okay, next. Many such groups as pressure groups and interest groups of leaders, businessmen, employees, etc. claim stakes in the government. Okay, next. It is the test for your understanding that how much you have understood. These are such questions which answers I will not give you. According to these slides, what you have learned and what I have taught to you, you have to find out. I will check your sense that how much you got my words. Okay. Students, one thing I want to tell you that this is the part 2 video for the same chapter 1 power sharing. In the next video, I will send you the question answers which you have to write down in your fair notebook. And those who have already done, then also they have to write it down. Okay. Thank you. If any type of queries and doubts are there, then you please comment me and or even in the given time you can send me your queries. Okay. Thank you, students.